Assalamu alaikum students. I'm Suhail Ahmad Bhatt. And we know that, as you know, that we have been delivering lecture on multiple aspects of our syllabus. But currently we have taken two things to consideration, two subjects into consideration. One is history and other is economics. So far in history we are about to complete this Delhi Sultanate. Yesterday we have given the penultimate lecture of Delhi Sultanate, and we are only left with architectural aspects of Sultanate itself. Then from there we'll be moving towards Vijayanagar Kingdom, and we have to study Vijayanagar Kingdom as a whole. Holistically, we have to study it because it's one of the most important kingdoms of the south, especially the reign of Krishna Deva Raya, which makes it very important. But contrary to that, we have taken other subject which is economics. And economics we have taken module, we are studying module wise, and first module has been almost completed. No, it has not almost, it has been completed, and we are into our second module, which is about money and banking. And in that module, we are covering various aspects of cashless economy. And today, we are into the third lecture of cashless economy. And today we'll be studying why. Because so far we have studied why is there need of a cashless economy. Now, today we'll be studying what government is trying to do about this cashless economy. But before we move on to that topic, we have studied. So yesterday I had posed your question, I had asked you a question that digital payment systems foster economic development, financial stability, as well as support financial inclusion. I had asked you to prepare some points, some worthy points about these topics, because that can expand, that can help you to build over this topic in a very comprehensive manner. I'm sure that you must have done it at your home, and I'm sure you must have prepared answer as of now. But I will have a slight description, brief description about this topic, about these particular aspects, not going into the details, because when we try to cover other aspects of our this economy, when we will go to those variables itself, then our discussion, you will come to realize about these points easily from there only. But slightly let me give you an idea. The first thing was about economic development. First thing and foremost thing we studied about that it fosters economic development. Economic development, it is itself a comprehensive and very holistic term. You have to study various aspects of development itself. Because one thing I would like to make you clear here, economic development does not revolve around only economic growth. But also inclusiveness. What? That is sustainability, that will aspect the idea of this environment that we can that will be sustainable economic development as a whole. But this time we'll limit ourselves to economic development. Economic growth plus inclusiveness. And inclusiveness itself is very vast term. Rather, we can add other term that would be equitable, inclusiveness and equitability. When we try to focus our
on our macroeconomic variable, we try to establish or develop a policy that can boom our economy. We standardize or develop our fiscal policy which helps in our economic growth. But that growth, if if it is full of inequality, does it lead to development? No. You will question that growth. Suppose there are 100 students in a class. And we have a 10% growth in our economy. Suppose this is an example. 10% growth. And among these 100 students, 10 are receiving 9% share of this growth because their money, their basic money, that is, or they are already doing well with their money. And जो growth होगी वो ज़्यादा means they have suppose they have 100 rupees. They already have a wealth of rupees 100. ठीक? अगर 10% ग्रोथ होगी तो इनके पास 110 बनेगा. ठीक बनेगा कि नहीं? अगर जो बाकी 90 स्टूडेंट्स हैं उनके पास 10-10 रुपए का, मतलब आधों के 10, आधों के पास 8, आधों के पास 7, ऐसे इतनी ही वेल्थ है. अब इनके पास अगर 10% ग्रोथ हो गई, इट विल बी 10.1, इट विल बी 8.8, it will be 11, it will be 8.8, it will be 7.7. इसके कंपैरिजन में देखिए इसकी वेल्थ कहाँ इंक्रीज हो गई और इतनी इनकी कितनी मिनिमल इंक्रीज हो गई. मीन्स अगर खाली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हमें इट डज नॉट से अबाउट दैट इनइक्वालिटी विल बी reduced. That is why we add on certain other parameters to this economic development that are inclusiveness and equitability. Equitability means we try to bring each and everyone at par, almost try to, though it's not possible in a society like India, because India has a booming population of almost 1.4 billion. It's not possible, but we can bring large chunk of money at least by giving them certain extra benefits. By giving them certain extra benefits, we'll try to establish, we'll try to make them at par with other rich people that are already present in our country. And inclusiveness would mean the same thing, that we'll have no gender, we'll have no distinction that will be based on gender, sex, creed, caste. We'll try to include each and everyone. And this can happen without cashless growth as well. But these two things, we do not, I'm not completely saying they are not possible in a cashless economy. But cashless economy is going to benefit and augment these two in a proper and at optimum level. How? Inclusiveness would mean benefits would equally reach to women, benefits would reach to ST, scheduled tribes, benefits would reach to scheduled caste and other minority groups. And for that, if we need a cashless transaction to happen, they need to be financially included in a proper formal financial system. Means we need to include them in a proper in a formal financial system. Once they are included in this formal financial system, means we are eliminating various ghost beneficiary, we are expanding the data. Once you have an expanded data set, means your statistics will have a large sample space. You will be able to cover larger chunk of a population
थ्रू एनी बेनिफिट प्रोग्राम। समझ आया? थ्रू एनी बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक। और साथ ही में इक्विटेबिलिटी में भी जब हम जो लोअर रंग पे होते हैं उनके लिए भी जब उनको फॉर्मल सेक्टर पे लाया, गवर्नमेंट के लिए टारगेटेड बेनिफिशरीज पहचानना आसान हो जाता है। जब टारगेटेड बेनिफिशरीज पहचानना आसान होता है, स्कीम का टारगेट बिल्कुल फायदा सबको पहुंचाता है। ठीक है? दिस इज हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ cashless economy. ठीक। Second would be and other aspects वो economic growth में ही आपको पता है, you know that when we have KYC norms applicable while using the wallet as well, while using the banking service as well, means our tax base would increase. Tax base would increase. Once tax base increases, tax revenue increases, and once tax revenue increases, in government public expenditure increases, and once public expenditure increases, demand and supply both is going to increase, and once they increase, employment opportunities are likely to increase in our economy, and once employment it will have another spillover effect. It will further boost demand and supply. When it further boosts demand and supply, we will be able to achieve our potential GDP. ठीक? Try to link the term. Economy is all about linking the terms and finding escape route and finding way how we can, because every concept in each economy is interrelated. ठीक? No. Similarly, we have spoken about the shadow economy. The chances of shadow economy are very rare in this cashless economy. Once chances of shadow economy are very rare in cashless economy, means most of the transaction would happen through formal system, and since most of the transaction happen through formal system, we have a check on corruption. Transparency would increase. Accountability would increase. Similarly, prospects of economic growth would also increase. Now, other aspects would be financial stability. ठीक? आप बता दीजिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में थोड़ा आप आइडिया आप बता दीजिए। What is financial stability? What is financial mean? Means there will be less number of fluctuations in the economy. Cashless economy. Start from here. Cashless economy. What does it demand? KYC norms. Does it? Yes. KYC norms will take you to which sector? Formal sector. ठीक? फॉर्मल सेक्टर में आपको गवर्नमेंट को पता चलती है, सेंट्रल बैंक को पता चल ही जाती है आपकी इनकम, आपकी एक्सपेंडिचर, आपका डेट, ठीक है, और बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स। ठीक है? तो जब ये सारी चीजें पता चल जाती है, और इससे पहले क्या होता था, जब गवर्नमेंट क्या करता था, गवर्नमेंट जब मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करता था लोगों की बेनिफिट के लिए, या कोई फिस्कल पॉलिसी
चेंज अभी हम नहीं पढ़ेंगे कि क्या चेंज कर रहा था और बेनिफिट कैसे हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन मॉनेटरी पॉलिसी। फिलहाल आप ये मान के चलो, जब गवर्नमेंट कोई चेंज करता था मॉनेटरी पॉलिसी में, हाँ, या फिजिकल पॉलिसी में, देयर इज वन इफेक्ट नोन एज ट्रिकल डाउन इफेक्ट। या अगर हम स्पेसिफिकली मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, और दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ठीक है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट या मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ये सही तरीके से सोसाइटी में हम एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू बी आउटसाइड द फॉर्मल सेक्टर। वंस दे आर आउटसाइड द फॉर्मल सेक्टर, मीन जो भी गवर्नमेंट अब काम कर रहा था यहाँ से लोगों की बेनिफिट के लिए, चाहे इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, चाहे ग्रोथ को टारगेट करने के लिए, उसका फायदा लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, because most of the people were outside this formal sector, they were present in informal sector। और जो भी अब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर रहा था लोगों के बेनिफिट के लिए, वो ट्रांसमिट हो रहा था लोगों तक। देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे 2021 की मैं बात कर रहा हूँ कि आप देखेंगे वहाँ एक्सक्लूसिवली ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज लोगों की इतनी चेंज कर दी अच्छी तरीके से, इससे बहुत सब कुछ चेंज हो रहा था, सब कुछ अच्छे से चेंज हो रहा था। गवर्नमेंट ने बहुत ही यूजफुल पॉलिसीज की किसके लिए, बट जो हमारा वहाँ लैगिंग था, ये ट्रांसमिट बिल्कुल और भी नहीं हो रही थी, अगर कि फॉर्मल सेक्टर में भी लोगों के तो फॉर्मल सेक्टर बेस भी बढ़ गई थी। वहाँ एक इफेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, दैट इज मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्या पढ़ना पड़ता है? और मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होता है? बैंक पेनिट्रेशन पे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन पे। वो जब बैंक पेनिट्रेशन तब ज्यादा होगी जब दूर दूर तो गांव तक हमें और लोग बैंक सेक्टर में हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, और वो कैशलेस इकोनॉमी से ये प्रोविजंस बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे वुड बी लेफ्ट आउटसाइड दिस नेट, this cashless transaction net, if they are not included into the formal sector, if they are not included with any financial intermediary। ठीक, जब वो इंक्लूड ही नहीं थे, ना ही मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट वहाँ आता, ठीक है, ना ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता, ना ही मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता, तो गवर्नमेंट की जो टारगेट स्कीम्स थी वो सही तरीके से काम नहीं करती थी। तो ना ही गवर्नमेंट को ये सही तरीके से एसेस हो रहा था कि हमें कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है और कितना हमें फिजिकल पॉलिसी को कैसे हमें चेंज करना है, जब बहुत ऐसी इकोनॉमी, इस लार्ज स्कोप इकोनॉमी कहाँ होती है? फॉर्मल सेक्टर से बाहर। तो फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? कैशलेस इकोनॉमी उसमें क्या कर रही है? फैसिलिटेट कर रही है। ठीक, तो इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे पास आती है। हाँ, नीचे पहुंचना, इट शुड पर्कुलेट टू द लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी एज वेल। ठीक, नाउ सेकंड वुड बी कैश में जब हम बात करेंगे, कैश की जब हम बात करेंगे, हमें पता है ये चीज, हमें पता है एट लीस्ट कैश इज वेरी वोलेटाइल। हाँ, anybody can steal, anybody can, हाँ, किसी भी जगह कहीं भी जगह पैसों की थेफ्ट हो सकती है, बट कैशलेस इकोनॉमी ये सारा चीज बाहर ही निकलता है, बिकॉज यू यूज योर QR कोड, दिस UPIs और दिस और नो ई-वैलेट्स, डेबिट कार्ड्स, और यहाँ वो चीज़ फिजिकल, एटलीस्ट फिजिकल थेफ्ट की
मतलब वो चीज़ एटलीस्ट वो बाहर वो डेट्स उस चीज़ को अवॉइड करने में यहाँ खासी मदद मिलता है. बट वी नो डेट वी आर लेफ्ट विथ साइबर सिक्योरिटी चैलेंज. वी आर नॉट डिनाइंग दोज चैलेंज, बट यहाँ फिजिकली ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट एक आई है. वर्ल्ड बैंक हमें बोलता है कि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है दे ऑफर immediate benefit to both sender and receiver in developing economies. ठीक है. और ये वर्ल्ड बैंक इकोनॉमी हमें वर्ल्ड बैंक ही बताता है कि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स है ये डेवलपिंग इकोनॉमीज में लाइक इंडिया में बहुत दोनों को फायदा पहुंचाते हैं, सेंडर को भी रिसीवर को भी. और जो एक्सेसिबिलिटी है वो अफोर्डेबल है. ऑल यू नीड इज इंटरनेट कनेक्शन एंड स्मार्टफोन. और नाउ देयर आर अदर डिजिटल फीचर्स जो फीचर फोन पे भी चलते हैं. ठीक है. ई रुपए ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था 2021 में, तो वो तो हम उसके बारे में वो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे. ठीक है. और क्या अफोर्डेबिलिटी इसमें है. अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे, हाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे, समझ आए. What is Europe? Europe is digital voucher. We'll have to study that in our this architecture. Money in electronic form. That will study. No. यहाँ अभी तक आपने बहुत सारा इसमें पढ़ा. फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको खुद बोलना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और कैसे होता है इसमें कैश इकोनॉमी से. Getting the population of the formal sector. हाँ. Banks. जब गवर्नमेंट ने जैम ट्रिनिटी स्टार्ट की थी, डू यू नो जैम ट्रिनिटी? जनधन योजना, आधार एंड मोबाइल. इसका जो मेन ये था एम था दैट वाज टू फाइनेंशियली इंक्लूड वेरियस सेक्टर्स ऑफ आवर. ठीक है. जैम ट्रिनिटी जनधन योजना वो योजना ही इसको योजना ही डायरेक्टली इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्टार्ट की थी. हाउ? ओपनिंग एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ अ फैमिली शुड ओपन ए वन बैंक सेविंग अकाउंट. ठीक है. फिर आधार के साथ उसको एनेबल करना था. मीन्स अगर आपका अकाउंट है आपको अपने आधार के साथ उसको लिंक करना है. मीन्स टारगेट इज सेट. ठीक. मोबाइल और मोबाइल नंबर के साथ भी लिंक करना है. नाउ सपोज माय मदर शी इज वेरी एल्डरली and government has started a scheme to benefit these elderly. What earlier I used to do, I used to go myself to bank and debit this account of hers, or government used to transfer this amount of money to my account. Whether I would give that money to my mother or not, that was not guaranteed. Or suppose if my mother had also an account, it was not still one problem is there. Still, it is not guaranteed whether she would use that money which government has benefited directly to her account, whether she would use it for her own self or she would use it for very other purposes which are not intended to be so. ठीक है ना. इतना ही ठीक है ना. जब अब मेरी माँ अब जब इसके पास खुद पैसा आना स्टार्ट हो गया, अपने पैसे आना स्टार्ट हो गए, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स शी विल फील एम्पावर्ड. हाँ. वंस शी इज एम्पावर्ड शी विल बी एबल टू टेक डिसीजंस.
And once she is able to take decisions, means we are constitutionally filling our the obligation, that is dignity of citizens. ठीक, जब dignity of citizens हमने के means I say cashless economy में financial inclusion की बेहद possibility रहती है. Every aspect of society can be included. It's not about women, it's about transgenders, it's about elderly people, it's about disabled people. Each and every can be financially included. And when financial inclusion takes place, spillover monetary policy transmission happens properly, trickle down effect happens properly, overall these all culminate into one particular thing, that is prosperous economy. That is prosperous. This was first set of the question. First we have tried to understand first part of the question. Second part was about challenges, and challenges we have already done. Third part is about how government has thought about it. Have they really come up with policies regarding it? What are the suggestions of different committees regarding it? These questions can come in the preliminary examination. These can come in your mains examination. You can use those these committee recommendations in your. And recently, you must have heard independence speech of Prime Minister of India, and also in our budget, that is, we have one particular term used, that is Amrit Kal. We have the Prime Minister Modi has used the term Amrit Kal, and in his speech he said that Amrit Kal, and in budget 2023 rather, budget 2023 says us that the promoting digital economy and digital economy, fintech and technologically enabled development is essential and primary goals of to achieve this Amrit Kal. And we will be studying this Amrit Kal in our coming lecture. That would be possibly in some coming time. तो उसमें हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही है इसको फैसिलिटेट करने में, एनेबल करने में और इसको प्रमोट करने में, वहाँ फुल फ्लेज उन पॉलिसीज पे गौर व फिक्र करेंगे. ठीक है, वो पॉलिसीज पढ़ेंगे एंड दैट विल बी द फाइनल lecture about this digital economy, that will straightforward move to monetary policy. ठीक है, this would be all for today. Thank you so much.